Assalamu alaikum everyone. उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे. Welcome back to another episode of PSL Deewane Season 2. मैं हूँ Alveena आपकी host and with me is Zaid Babar Khan. आज था double header, but we are going to be covering Karachi Kings versus Multan Sultans. It was a happening match. Karachi won the toss. They decided to bowl first, and captain on debut थे David Warner. There was a lot going on through the game. Abbas Afridi with a winning shot. It was just a third match of the tournament and had everyone on the edge of their seats. What a game it was, Zed. What are your thoughts? And Assalamu alaikum. How are you doing today? Walaikum salam. I'm doing great. Yes, like the game was a very interesting one compared to the morning one. Like that was quite a one-sided game, but this one I think like was probably like one of the best matches in PSL history. I would say. Like we saw a very high-scoring thriller, so it was nice to see. Yes, definitely बहुत happening match था ये. चलें हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की दोनों साइड्स की. पहले मुल्तान सुल्तान्स को देख लेते हैं. मोहम्मद रिजवान कैप्टन, then we had Shai Hope, then we had Usman Khan, Kamran Ghulam, Michael Cristwell, and then we had Abrar Ahmed, Chris Jordan, David Willey, Shahid Aziz, Usama Mir, and Akif Javed. Zaid, what do you make of this playing 11? I think like मैंने जो सीजन्स पहले like playing 11 सोची थी उनमें से मुल्तान is probably the only one जिसके like मैं क्लोज आया था थोड़ा. बट अच्छा. उससे मेरा ये था कि जॉनसन चार्ल्स मेरे ख्याल से स्टार्ट कर रहे थे बट वो लाइक इंजर्ड हो गए थे प्रैक्टिस में, तो इस वजह से वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए शे होप से ओपन किया उन्होंने. बट ओवरऑल आई थिंक लाइक काफी एक बैलेंस्ड 11 थी इनकी. बट आई थिंक के पेसर्स में इनके पास थोड़ा लाइक Shahid Aziz like is known for bowling at the depth in domestic circuit, but I think क्योंकि वो रन experienced है अभी, तो इसलिए उनको आधे रन भी काफी हुए. बट उसके अलावा आई थिंक क्रिस जॉर्डन के अलावा लाइक देयर आर नो लाइक डेथ ओवर बॉलर्स इफ यू मतलब कि अगर आप देखें तो जो कि आखिर में क्राइम आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है. उसके अलावा आई थिंक इट्स क्वाइट लाइक अ बैलेंस स्क्वाड. Right. Then we have Karachi Kings playing 11. We have Tim Seifert, David Warner, the captain, James Vince, Shad Masood, Araf Minhas, Khushdil Shah, Irfan Khan Niazi, Abbas Afridi, and then we have Abad Ali, Adam Milne, and then we have Hassan Ali. Ye bhi kya aapke thoughts the? It was a happening match rather. I think like this was also like a quite a balanced playing 11, but one thing I think like that is missing from Karachi's 11 and like even from their like whole squad is like the lack of a proper spinner, like a front line spinner. You do have Arafat Minhas and Khuddil Shah, but I think like bowl they will not like they're not someone that will bowl 4 overs each in every match. Like we did bowl decently today, but still Arafat bowled only 2 overs, and he's not like a very experienced spinner as well. So I think that is one department where they are lacking. Definitely, I do understand your point there. Challenge first innings in Arafate and batting Multan Sultans. It was Rizwan and Shai Hope opening the innings. Kya aapko lagta tha? Were you expecting Shai Hope? I know you touched on the fact that someone else was supposed to open, but did you think Shai Hope आएंगे open करेंगे? क्या आपके thoughts थे when you saw them walking on the field together? Yeah, like just I said कि जॉनसन चार्ल्स के प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गए थे और उनकी आई थिंक रिप्लेसमेंट है बेन मैकडर्मट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो like he's basically I would say he's like kind of a like for like replacement. But वो भी like I think उनको आने में जरा टाइम लगेगा, तो that is why Shea Hope opened the batting. बाकी I think Right. like बाकी उनकी लेवल like balanced ही है and like it was a good opening partnership जब तक like Shea Hope थे उधर. But I think वो भी like हसन अली को credit जाता है, उनका न्यू बॉल स्पेल बहुत अच्छा था. Yes, definitely. He took him away literally. Okay, moving forward, we have Kamran Ghulam. He joined Mohammad Rizwan Creaspe after Usman Khan's dismissal. How important was that knock from Kamran Ghulam? What do you think? What do you make of that knock? Running between the wickets, running ones into twos. Yeah, I think like रनिंग भी और उसके अलावा स्पिनर्स को काफी अच्छा अटैक किया था कामरान गुलाम ने, लाइक माइकल ब्रेसवेल को और अरफात को, इवन खुदिल को भी.
कि लाइक सॉरी फजल और अराफात को माइक कामरान गुलाम ने लाइक काफी अच्छा अटैक किया था। रिजवान ने लाइक उतना उस वक्त जरा बैकफुट पे चला गया था, उनके बैक टू बैक विकेट्स गई थी। तो आई थिंक कामरान गुलाम ने लाइक अच्छा काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट स्पिनर्स। हम्म। रिजवान की आपने बात की है तो फिर बात करते हैं रिजवान के बारे में। He anchored the innings beautifully. He led from the front. I mean, I don't know what else to say about him. Like, his knock was amazing. 100 not out, 63 balls. How what do you make of his knock? How does this impact the team and the motivation levels of the team? I think like Rizwan maybe like started a little slowly, but considering Karachi won in the last over, and so I think like maybe he did cover it well. Mm-hmm. So I don't think like the strike rate would have been a problem for the team, but yeah, his partnership with Bracewell was like a brilliant one. Like they scored around 70 runs in the last 4 overs, I think. So I think like there was some like a really great partnership. Mm-hmm. क्या आपको लगता है कि the way he came out, led from the front, क्या impact पड़ेगा टीम पे इससे? Considering they had a pretty good total and they still did not make it over the line. I think कि रिजवान इज लाइक समवन जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि लाइक एक वो जिसके अराउंड आप कह सकते हैं इनिंग्स बिल्ड होती है, लाइक बाकी टीम जो है उसके अराउंड खेलती है। Mm-hmm. लाइक जब से रिजवान मुल्तान सुल्तान में हमने लाइक ये देखा कि लाइक ही ओपन इनिंग और उसके साथ में लाइक शुरू के सीन में राइली रूसो, शोएब मकसूद, खुशदिल शाह, टिम Must. डेविड भी बाद में थे, कायरन पोलार्ड, ये सारे लाइक उसके अराउंड बैट करते थे बेसिकली कि एक एंड से रिजवान लाइक एंकर करता था, लाइक उसके इर्द गिर्द लाइक हिटिंग करते थे। तो आई थिंक ये इनका फॉर्मूला है जो कि जिससे कंटिन्यू करेंगे आगे भी, और लाइक दैट हैज वर्कड वेल फॉर देम इन द पास्ट। Mm-hmm. Right, rightly so. Bowling की तरफ आ जाते हैं Karachi Kings. I mean, I don't have much to say. I will let you do the talking for that matter. But बीच में हमने देखा भी that discussion हो रही थी, between the coaches, Ravi Babar's, expressions were there. They got the attention. बात हो रही थी. So again, Tim Seifert he was very quick behind the wickets. Took the big wicket of Usman Khan. Usman Khan can be very damaging. PSL we've seen in the last season. How important was his wicket to take that wicket at the time in the context of the game? I think like that was a very important wicket क्योंकि शुरू में रिजवान उस टाइम तक जरा अटैक करना शुरू हो गया था, तो लाइक उस्मान खान को जल्दी आउट करना था लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमने देखा कि उस्मान खान अगर लाइक क्रीज पे लाइक खड़े हो जाए थोड़ी देर तो लाइक वो एक उसको कन्वर्ट अच्छी तरीके से करते हैं पीएसएल में, लाइक वो ही हैज स्कोर्ड सम बिग सेंचुरीज इन द पीएसएल। सो आई थिंक उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट विकेट थी। बाकी आई थिंक कराची की बॉलिंग में शुरू में हसन अली का स्पेल काफी अच्छा था, एंड दरमियान में तो मैंने देखा He लाइक went. खुशदिल शाह की बॉलिंग काफी लाइक उसने लाइक बेहतर बॉलिंग की खुशदिल ने, लाइक ही केप्ट थिंग्स टाइट कंसीडरिंग के लाइक जो हाई स्कोरिंग मैच हो रहा था उस लिहाज से लाइक ही ओनली कंसीडर्ड 33 रन्स। तो बाकी इनका भी आई थिंक मुल्तान वाला एक लाइक मसला है डेथ ओवर्स बॉलिंग का, क्योंकि अगर हम देखें लाइक हसन अली एंड अब्बास हमीदी have like normally a good death overs bowler, but I think वो आज जरा काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए थे अपने स्लोअर रन्स के Mhm. साथ। तो आई थिंक लाइक दिस वाज द रीजन कि लाइक टोटल कुछ लाइक ज्यादा ही हो गया था। आई थिंक लाइक जो लाइक 70 ऑट रन कंसीड किए थे इन द लास्ट 4 overs। Mhm. Vasa Felipe, you did touch upon him, and he had a rough night. Beach he did come back, but he struggled. And do you think he struggled with his length? What was the problem today? आई थिंक लाइक लास्ट के ओवर में वो काफी प्रिडिक्टेबल हो गया था, जैसे मैंने कहा कि लाइक ही केप्ट बॉलिंग ऑन द स्लो वंस जब इवन दो दे वर गेटिंग हिट। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम थी कि लाइक उसका कोई बैकअप प्लान नहीं हमें नजर आया। हो भी सकता है, right, right, definitely. Acha, Hassan Ali Pay, you did touch upon him as well, and again, opening spell, as you've said, it was good, but he went for 21 plus runs in an over. Kitna mushkil hota hai for a bowler to come back from an injury and to find his rhythm, under pressure will be. I mean, he had a good domestic season, but again, PSL, mein aaye hain, it was his returning from injury. Kya कहना आपको इस बारे में?
लाइक आई थिंक उसने प्री सीजन एक मीडिया टॉक में भी उसने कहा था कि लाइक ये सीजन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक कि National side वो player. उस तरह से आई थिंक कि आज वो लाइक परफॉर्म नहीं इस तरह कर पाए। एक तो ये बात की कंडीशन उस तरह की नहीं थी, और दूसरा आई थिंक कि उसको यूज भी उस तरह नहीं किया गया जिस तरह आई थिंक करा जाना चाहिए था उसको। लाइक ही शुड हैव बॉल्ड इन द मिडल इंस्टेड कि आप उसका लाइक एक दो ओवर्स के डेथ ओवर्स तक बचा के रखें, तो आई थिंक कि हम्म, उसको यूज भी बेहतर किया जा सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। Second innings पे आते हैं. It was Karachi Kings batting. It was David Warner and Tim Seifert started aggressively. And what are your thoughts on the intent David Warner की captaincy पे for that matter? लाइक मुझे था कि शायद डेविड वार्नर ओवर द टाइम लाइक एज फैक्टर और सारी चीजों को देखते हुए अब जरा लाइक मोर ऑफ एन एंकर रोल की तरफ चला जाए, जिस तरह हमने लाइक रिसेंटली IIT 20 का बिग बैश में भी देखा है। बट आई थिंक आज उसने लाइक सिचुएशन को अच्छा अंडरस्टैंड किया और उस लिहाज से लाइक उसने बैटिंग की शुरू में। इवन दो खाली लाइक 12 और 6 था, बट आई थिंक वो स्टार्ट लाइक काफी इंपॉर्टेंट था कराची के लिए, कंसिडरिंग के लाइक जब बॉलर आउट हुए तो दे वर लाइक 44 फॉर 1 इन 3.2 Mm-hmm. ओवर्स, तो आई थिंक वो स्टार्ट काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से लाइक इवन अगर बैक टू बैक आउट्स हुए भी थे अरफात मिनाज के या शान मसूद के, तो दे वर नॉट लाइक फुली आउट ऑफ द गेम। इसी वजह से आई थिंक उनके ऊपर से टीम साइफर्ट ने भी लाइक काफी एक अच्छा स्टार्ट दिया न्यू बॉल से पावर प्ले के अंदर, और डेविड वार्नर ने भी, तो आई थिंक ये एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी दोनों की। उनके लिए बेस सेट हो गई थी for that matter. You're absolutely correct. अच्छा, Khair, they lost two big wickets, and it was probably chaos in their camp. Probably, they were stressed. We don't know kya unke dimag mein ho raha hoga. But again, Khushdil Shah and James Wins came and they saved the day for Karachi Kings. पहले Khushdil Shah पे बात करते हैं. He was playing for Multan Sultans all the way up till last year. And again, the composure he had, he played against the team he was playing for. क्या कहना आपका Khushdil के बारे में? How do you rate his knock? I think like it was a like a pretty good knock by Khusdil, considering कि like Khusdil का एक like recently मसला रहा है कि from the start के like he takes his time to get going. So I think like it helped him कि like दूसरी तरफ जेम्स विन सेट खड़ा था और like he was hitting the ball ताकि Khusdil को थोड़ा टाइम मिल जाए और like he should मतलब कि आई कर लेते। और उसके Mm-hmm. बाद लाइक फुटजिल की लाइक अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म ये भी रहा है काफी देर के लाइक वो स्पिनर्स को उस तरह हिट नहीं कर पाता, बट आई थिंक आज उसमें लाइक काफी वो बेहतर नजर आया स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, तो आई थिंक ये काफी इम्प्रूव फुटजिल नजर आया हमें, जो कि रिसेंट टाइम में हमें वैसे भी देखा है लाइक चैंपियंस ट्रॉफी में या न्यूजीलैंड से कि वो लाइक बेहतर खेल रहा है, उसको लाइक एक रिटर्न परफॉर्म हुई। Taking use of the opportunities, right? James wins. He nearly took his side home. Kya keh rahe, scored a century as well. What do you make of his knock for that matter then? Two good knocks today we've seen. Yeah, like I think it was like a pretty special knock considering के Form में भी पावर प्ले के नहीं अंदर था. लाइक या लाइक पावर प्ले के अंदर लाइक दे वर 3 डाउन और उसके बाद वहां से लाइक 235 चेस करना, तो आई थिंक लाइक इट वाज अ वेरी लाइक ऐसा कभी लगा नहीं कि उसको देख उसकी लाइक इनिंग्स को देख के लाइक इवन एट 1 पॉइंट ओवर 14 रन्स पर ओवर का रिक्वायर्ड था, बट ही नेवर लुक्ड अंडर प्रेशर। सो आई थिंक वो एक अच्छी इनिंग रही उसकी कि लाइक उसने लाइक स्कोर बोर्ड प्रेशर पे इसने ध्यान नहीं दिया, बट ही प्लेड लाइक हिमसेल्फ। Yes, he definitely did. He was out there very much, focused on taking his side home. खैर फिर ये भी हुआ था, two set batters. The wickets fell back to back. Unlucky run out हुए. James wins and then Khushdil chucked it onto the stumps. क्या लगता है वहाँ पे थोड़ा सा momentum shift हो सकता था, हुआ भी होगा? आई थिंक लाइक तब तक दोनों की पार्टनरशिप से लाइक काफी गेम सेट हो गई हुई थी कराची किंग्स के लिए, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 12 रन बॉल रिक्वायर्ड थे, तो आई थिंक लाइक उसके बाद इरफान खान न्याजी अब्बास सफीदी लाइक ये दोनों बैटिंग कर लेते हैं, इवन हसन अली एंड एडम मिल कैन बैट अ लिटिल, तो आई डोंट थिंक लाइक उस वक्त तक कुछ हो सकता था उसके बाद। They took it away. I mean, doubles किए थे end पे आके and batters ने, so they really took it away and they won the match. Khair, bowling, Multan Sultans, David Willey went for plenty. What went wrong for him today? वो लाइक वही बात मैं जो कर रहा था कि कंडीशन उस तरह की लाइक सूटेबल नहीं थी फॉर फास्ट बॉलिंग, तो आई थिंक लाइक दैट इज व्हाई डेविड विली वाज नॉट दैट इफेक्टिव।
Hmm. क्योंकि वो like he doesn't have that express space या anything else like जो कि उसको हेल्प करे इस टाइम कंडीशन में प्लस आई थिंक सेकंड इनिंग्स तक ड्यू भी आ गई थी माइकल ब्रेसवेल कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आई थिंक Yes. कि वो भी फैक्टर रहा है काफी उनकी बॉलिंग में हमने देखा था कंडीशंस की बात करें तो मोहम्मद रिजवान did bring spin on early as well. बिल्कुल आई थिंक लाइक माइकल ब्रेसवेल का लाइक जब से वो पिक हुआ तो अली तरीन ने भी लाइक एक काफी जगह ये कहा है कि माइकल ब्रेसवेल को लाइक पिक करने की एक वजह ये भी थी कि लाइक उसका पावर प्ले के अंदर बॉलिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा है और लाइक उसने डेविड वार्नर को आउट भी किया तो आई थिंक कि ये लाइक उनका प्री प्लान एक था कि लाइक दे विल बोल ब्रेसवेल एट लाइक एटलीस्ट 1 ओवर इन द पावर प्ले तो आई थिंक दैट वर्क फॉर Hmm. देम It definitely seemed to work for them then. खैर फिर आते हैं आकिफ जावेद. He was also on a hat trick at one point. How impressive was his spell for you? You know, उन्होंने ली भी big wicket. मैं देख रही हूँ Tim Seifert की, and then he had Shan Masood as well, and he also had Khushdil Shah. I think like Arctic was like quite decent today considering कि like इतनी high scoring games थी तो I think like उसमें 41 and 4 was not that bad considering that he took 3 wickets तो especially with the new ball I think like he was quite effective like जैसे हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था like उसका वो कंट्रोल नहीं था मूवमेंट के ऊपर जो कि like लेकिन आज हमने देखा वो काफी like इम्प्रूव नजर आया उसका कंट्रोल ओवर द न्यू बॉल Right. फिर एक और है हमारे पास Shahid Aziz. I've heard a lot about him from all of you guys. He had somewhat of a rough outing today, you know. क्या क्या आपके राय है उस बारे में? Like, what do you have to say about that? Like शायद इसको जितना मैंने डोमेस्टिक में देखा I think like he has a reputation for bowling in the later overs and like Mhm. Multan I think brought him in the 13th over and but considering कि like उस वक्त एक situation ऐसी थी like दो set batters खड़े हुए थे तो I think it would be unfair to expect शायद to like take wickets in this situation considering कि like it was his first PSL game so I think, but he still like showed us some like variation that he has. Like he bowled a slow bouncer to fulfill that and did not get hit. So slow, I think like he did bowl pretty well, but like those set batters खड़े हुए थे with the dew. So I think like conditions were not with him. Definitely, conditions could play a very important role for that matter. Right, so this was the breakdown. Table को देखते हैं. You know, the 3 matches हो चुके हैं. आज था भी double header, Peshawar versus Quetta, and then Lahore versus Lahore what was it? Multan versus Karachi. Acha, so PSL ka table dekhte hain. It's Quetta Gladiators up top, and then we have Islamabad United followed by Karachi Kings, Multan Sultans, Lahore Qalandars, and Peshawar Zalmi. Peshawar Zalmi find themselves at the end of the table. Zaid, kya? I don't know if you were you like keeping up with the game, the first game. Yeah, like Peshawar में I think like काफी one sided like वो match आ रहे like negative 4.0 run rate तो I think इस वजह से like they are last at the table और I think like it will be important for them and like quite difficult for them to recover up in terms of net run rate after this loss. So let's see क्या होता है. Let's see क्या होता है. कल है फिर your preferred team. It is Lahore Qalandars versus Quetta Gladiators. How are you seeing that team? Quetta won. You know, they are off table पे बैठे में ऊपर. क्या आपका कहना है? How are you seeing this clash tomorrow? I think like Quetta has a really balanced team जो जिस तरह उन्होंने आज शो किया like मैच से पहले काफी लोग कह रहे थे कि like उनकी प्लेइंग 11 नहीं बनती एक्सेट्रा तो Hmm. आई थिंक लाइक आज उन्होंने लाइक काफी अच्छा एक शो किया है पहले मैच के अंदर स्पेशली कि like they are a good team and a very like well balanced team with like they have all their bases covered. So I think like it will be a difficult game for Lahore considering like they have also lost their first game. So let's see. Is there any particular player, bowler जो आप चाह रहे हैं कल देखना either side में, किसी भी side में, या batter, bowler? Quota ki like I think 11 like was pretty balanced except like one change maybe they could like do play Shoaib Malik but I think that is because like Mark Chapman is not available right now so I think that's why Hmm. but लाहौर की तरफ से अगर लाइक मैं बात करूं तो आई थिंक दे शुड प्ले रिशाद हुसैन टुमारो एंड yeah that's it I think from Lahore side like they should play Rishad Hussain tomorrow instead of maybe David Visa. अच्छा.
Right. चलें फिर देखते हैं कल क्या होता है. It will be quite an interesting match tomorrow, considering Quetta Gladiators have already won. They will be in high spirits, whereas Lahore Qalandars they have yet to open their account. Well, that is pretty much it from Zaid and I, and yeah, we will see you inshallah soon with another episode of PSL Deewane brought to you by the sports side. If you guys enjoyed, then go ahead and like kare, share kare, subscribe kare, share with everyone who's gonna enjoy. And that is pretty much it. And good night and Allah Hafiz from our side.